Class 10th Physics Made Easy. In this video, I am sharing the most repeated and highly important topics and questions with solutions, so don't miss out. Hi everyone, welcome back to my channel. It's me Sian, a CBSE 11th grader humanities student. Here, I create study related content like study vlogs, study routine, study tips, study hacks, and much more for all the viewers and students like you. Last year, I made a biggest mistake in my science board exam which costed me terrible repercussions. So I don't want you to repeat them. And if you want to watch that experience, then you can watch my video that I have already posted yesterday, and you can access that video with the links that I have kept in the description box as well as in the comment section below. But today, I'm not here to waste your time. Instead, I am here to make sure that you don't waste your precious time on unnecessary topics. जो लास्ट ईयर मैंने गलती करी थी, आई डोंट वांट कि वो गलती आप करें, सो इसीलिए एंड आई रिसोर्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सो उसी की वजह से आई लिस्टेड 10 इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर एवरी चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स सेक्शन, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कौन कौन से फिजिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में, so that you can get a brief idea how to write the answers in the board exam. and मैंने सारे मार्क्स भी एलोकेट कर रखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इतने मार्क्स से क्वेश्चन में आपने कितना आपने आंसर करना है, बिकॉज साइंस इज़ नॉट लाइक द इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट. यहाँ पे यू नीड टू गिव द टू द पॉइंट आंसर. यहाँ पे देयर इज़ नो वर्ड लिमिट, बिकॉज अगर आप ज़्यादा ओवर एक्सीड कर रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स. सो साइंस इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट. सो आपने हर एक चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही लिखनी है. इट शुड बी कंसेप्चुअलाइज. दैट इज़ वाई मैंने ये PDF बनाई है. एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड द एक्सेस टू दैट PDF is being linked in the description box as well as in the comment section, so that it would be convenient for you to just boost up your preparation. If you found this helpful, then comment on below. Also, if you want more such content, then you just have to comment yes. Also, hit that like button so that you can not miss out any further board exam tips. And if you haven't subscribed yet, then please subscribe to my channel. Also hit that bell icon for latest updates. Bye.